Hello students, molecular orbital theory second part is continued. If we talk about the molecular orbital energy level diagram, the molecular orbital energy level diagram is different, right? If we talk about the number of electrons, right? If the number of electrons are less than or equivalent to 14, right? We have the orbital energy level diagram same as that of the nitrogen, right? But when the number of electrons are greater than, right, are greater than 14, right, then the molecular orbital energy level diagram gets changed. So we will try to understand why it happens, right? We will try to understand this point. As in the case of nitrogen, when we write the electronic configuration of nitrogen, we have 1s2, 2s2 and 2p3, right? Now we have two nitrogens, nitrogen here and nitrogen here. When their atomic orbitals will combine, they will form molecular orbital N2. So 1s2 and 1s2, total we have 4 electrons, 2 and 2. This is sigma 1s, this is sigma s streak 1s, right? 1s2, 1s2, right? Now 2s2 and this is 2s2. Now we have total 4 electrons, 2 here and 2 here. This is sigma 2s2 and this is sigma s streak 2s2, right? After this, now this is 2p3, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3. Total we have 6 electrons, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? This is pi 2px, this is pi 2py, this is sigma 2pz, right? And this will be pi star 2px, this is pi star 2py, and this will be sigma star or streak 2pz, right? Up to N2 molecule, that is number of electrons equal to 14 or less than 14, right? As the case of N2 molecule, we have the orbital energy level diagram in this way, right? In this way we have the orbital energy level diagram, right? But as we talk about O2 molecule, F2 molecule, this orbital energy level diagram gets changed here, right? For these 3 atomic orbitals, right? Not sigma streak 2s, this is this much, I am talking this, right? This gets changed. Sigma 2pz, it comes downward, and these two degenerate orbitals, right, they will get up, and sigma 2pz will get down. Why this happens, right? In case of O2 and F2 like molecules, right, which have 16 as well as 18 electrons, right? Why this happens here in case of these? So it has very simple reason.
in case of F2 comma O2, right, there is no 2s2p mixing, there is no 2s2p mixing, whereas in case of B2 C2 molecule N2 molecule, there is 2s 2p orbital mixing, right. That is why in case of N2, right, we have pi 2px equivalent to pi 2py equivalent to sigma 2pz, right, in the orbital energy level diagram, and this is sigma 2pz, right, in this way. But as we talk about O2 or F2, the energy level diagram takes the turn in such a way that sigma 2pz comes downward and pi 2px equivalent to pi 2py gets up. It means there is no mixing between 2s and 2p, 2s and 2p के बीच में यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है, राइट। लेकिन B2 C2 N2 के केस में 2s और 2p के बीच में क्या होती है, मिक्सिंग होती है, राइट। इसीलिए हमारे पास जो है ये एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या आता है, डिफरेंस आता है, राइट। तो अब जैसे हमको देखिए, अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना हो किसी भी मॉलिक्यूल का विदाउट ड्राइंग एनर्जी लेवल डायग्राम, वी राइट फर्स्ट सिग्मा, right, sigma 1s2, I will rub this here. So how we will write the electronic configuration, right, but we have two cases. First is number of electrons greater than 14 and second is number of electrons less than or equivalent to 14, right. तो मैंने बताया इस केस में कैसे लिखेंगे, इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन और इक्वलेंट टू 14। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा एस्ट्रिक 1s, राइट। सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s, राइट। पाई 2px इक्वलेंट टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, राइट। पाई स्टार 2px इक्वलेंट टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा, आप स्टार रीड करें स्ट्रिक रीड करें, राइट, डजेंट मैटर। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। अब जैसे सपोज हमको नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, राइट। आई विल राइट 2 इलेक्ट्रॉन हियर, 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 राइट। कितने हुए 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12, 2 इलेक्ट्रॉन हियर। तो इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, राइट।
अगर आपको C2 का लिखना हो, आपको B2 का लिखना हो, तो यू कैन राइट। बट इन केस ऑफ, अगर मैं बात करूं O2 मॉलिक्यूल, राइट, विच हैज़ 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। सिग्मा 1s2 तो लिखना ही है, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं। सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, यहाँ पे भी कोई चेंजिंग नहीं, सेम है। लेकिन हमने आपको कहा था कि जो सिग्मा 2pz है वो डाउनवर्ड आ जाता है, और पाई 2px इक्वल टू पाई 2py अपवर्ड आ जाता है, राइट। और सेम ही रहेगा पाई एस्ट्रिक 2px इक्वल टू पाई एस्ट्रिक 2py एंड सिग्मा एस्ट्रिक 2pz, राइट। तो इसी पोर्शन में हमारे पास जो है चेंजिंग आता है, राइट। अप टू N2 जो है ये चीज़ पहले आती है और ये बाद में, लेकिन O2 के केस में ये पहले और ये बाद में, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर लिए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए, और 2 10 हो गया, 2 12 हो गया, 2 14 हो गया, राइट। और 1 यहाँ पे आएगा 15, और 1 यहाँ पे आएगा 16, क्योंकि इनका एनर्जी इक्वल है, तो इसलिए आपने हुन्स रूल फॉलो करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो इस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। तो इस वीडियो का हम यहीं स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।